तो हे गाइस, माय नेम इज इमरान भाई और आज हम एक पावर बैंक बनाने वाले हैं। ये वाला पावर बैंक पूरा डिटेल में रहेगा, मतलब ये वाले पावर बैंक का जो 2 एम्पियर और 1 एम्पियर जो करंट प्रोवाइड करता है वो रियली प्रोवाइड करता है या नहीं, हम लाइव देखने वाले हैं। एंड में इसका रिज़ल्ट आपको दिखेगा। वीडियो को एंड तक देखिए गाइस। आपको पावर बैंक बनाने से लेके उसका लाइव प्रूफ दिखाने तक आपको वीडियो देखना है। अगर आपको डायरेक्टली देखना है रिज़ल्ट इसका, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और आपको अगर ये सर्किट परचेस करना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गाइज, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। और अमेज़ॉन पे ये इजीली अवेलेबल है गाइज, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। तो गाइज़, मैंने यहाँ पे लैपटॉप के बैटरी पैक का यूज़ किया है। मैंने ओल्ड लैपटॉप बैटरी पैक का यूज़ किया है और उसमें से सेल्स निकाल लिए। फिर मैंने उस सेल्स को चेक किया मल्टीमीटर से कि ये वर्क है या नहीं, मतलब ये रिचार्ज हो पाएंगे या नहीं, इसमें वोल्टेज है क्या नहीं है, मैंने चेक किया मल्टीमीटर से। आपको भी वही करना है। आप कौन सी भी सेल लोगे तो आपको पहले चेक करना है मल्टीमीटर से ये वर्किंग है या नहीं। सो अभी आप गाइज देख सकते हो कि मैंने सारे सेल्स को पैरेलल कनेक्शन में लगाया है। पैरेलल कनेक्शन में क्यों? क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में हमारा वोल्टेज सेम रहेगा और हमारा करंट है वो बढ़ जाएगा। इससे हमारा जो वोल्टेज है वो 3.7 ही रहेगा और हमारा करंट डबल होते जाएगा। जितना हमारे सेल्स रहेंगे उतना हमारा करंट बढ़ते जाएगा। तो इसलिए हमने ये पैरेलल कनेक्शन में लगाया हुआ है।
till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. गाइस अभी ये वाले पावर बैंक में बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, पूरा 0% है। तो अभी हम इसको चार्ज करेंगे और इसका लाइव प्रूफ देखेंगे कि ये कितने स्पीड से फ़ोन को चार्ज करता है। See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where
तो चलो गाइस अभी इसको टेस्ट करते हैं और इसका देखते हैं कि ये कितना तेज फ़ोन को स्पीड से चार्ज करता है। तो अभी गाइस हम जो भी केबल यूज़ करने वाले हैं ये ओरिजिनल केबल रहेगी। आपको भी ओरिजिनल केबल ही यूज़ करना है। अगर आप डुप्लीकेट केबल यूज़ करोगे तो फास्ट चार्जिंग नहीं होगा, क्योंकि ये भी मायने रखता है, क्योंकि आपका केबल फास्ट डेटा ट्रांसफ़र करेगा, फास्ट पावर ट्रांसफ़र करेगा, तभी आपका फास्ट चार्जिंग होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और आपको फास्ट केबल मतलब आपका ओरिजिनल केबल आपको रखना है, यूज़ करना है। तो गाइस हमने यहाँ पे अभी चालू किया है और आपके सामने दिख रहा होगा कि ये 1.0 एम्पियर प्रोवाइड कर रहा है अभी, पर आपको 1.0 एम्पियर मिल रहा है या नहीं ये आपके सामने आपको दिख रहा है। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हो कि ये 700 से लेके 900 के बीच में हिल रहा है। चलो गाइस अभी हम सेकेंड वाले पोर्ट पे जाते हैं। ये वाला पोर्ट है जो 2.0 एम्पियर प्रोवाइड करता है। तो चलो देखते हैं कि ये वाले पोर्ट में हमें कितना सुपर चार्ज मिलने वाला है। तो गाइस अभी आपने देखा ही होगा कि हमें कितना आउटपुट मिल रहा है। तो अभी हम चलो आपको ये भी दिखा देते हैं कि हमारे घर की बिजली का यूज़ करके हमें कितना आउटपुट मिलता है हमारे चार्जर से। तो गाइस इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक पावर बैंक बनाया था, लिंक है डिस्क्रिप्शन गाइस, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ये वाले पावर बैंक का मैंने लाइव ऐसा दिखाया नहीं था, तो मैंने ये वाले वीडियो में इसको दिखाया हुआ है। तो आप इस पे देख सकते हो कि इसका हमें कितना आउटपुट मिल रहा है।